This is the third lobe, pars intermedia. That's here in between the anterior and posterior. Responsible for formation of melanocyte stimulating hormone, जो कि मेलेनिन को बनाता है और स्किन पिगमेंटेशन करता है. Now, let's talk another gland that's called pineal gland. Where is it located? It's located in between the two cerebral hemisphere. आपका left और right hemisphere के बीच में. Now, what is it doing? It is responsible for forming melatonin. Okay, melatonin is a sleep hormone. ये आपकी बॉडी का क्लॉक जिसे बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है. मतलब आप अगर एक रेगुलर रूटीन में you are sleeping at 10 o'clock and you're waking up at 6 o'clock. So that will be recorded by your brain. So that recording is done by your melatonin. तो next day भी अगर आप यही चीज़ follow करते हो, third day also you do that, and then the fourth day by any chance you are not at home but 10 o'clock को आपको हल्की सी नींद आएगी because you are used to that. And morning में when you don't want to get up also आपकी eyes कई बारी उसी टाइम जो रेगुलर टाइमिंग है उसी टाइम में कई बारी होता है ना. हम लोगों को जितनी आदत होती है सुबह कॉलेज जाना है, सो लेट्स ओपन मे बी बाय 7 यू हैव टू रीच, सो यू वोंट बी गेटिंग अप बाय 6. अगर एक दिन छुट्टी है तो रोज़ 6 o'clock को उठने वाला बच्चा ऑटोमेटिकली विल गेट अप एट 6 even though the person doesn't want to get up. Maybe the person will not get up from the bed पे ही रहेंगे, but still वो जो क्लॉक होता है बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो कंट्रोल करता है हमारा मेलेटोनिन. रिमेंबर दैट. सो योर स्लीप वेक cycle is controlled by the hormone produced by the pineal gland, a very small gland present in the brain. Now the next is thyroid gland. Thyroid is the largest endocrine gland. It's present in front of आपके ट्रैकिया के आगे और larynx के नीचे located है. It's made up of 2 lobes. It's like this, one lobe and the second lobe. इन दोनों लोब का जो कनेक्शन है वो isthmus करता है. The connection is done by isthmus. And what is this thyroid structure made up of? Connective tissue है जिसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. And basic structural and functional unit of thyroid is thyroid follicle. Very 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 important. तो थायराइड ग्लैंड कौन बनाता है? बहुत सारे थायराइड फॉलिकल एक साथ आते हैं. दे फॉर्म थायराइड ग्लैंड. रिमेंबर दैट. दिस इज important, so I'm just highlighting it once again. The basic structural and functional unit of your thyroid is the thyroid follicle. The thyroid gland. Yes, that well-known butterfly-shaped gland found in the neck region. Although comparatively tiny, it controls many vital processes in our body, like metabolism, cardiovascular function, and even growth and development. But did you know that an estimated 12% of the population have some form of thyroid disease? Or that women are 5 to 8 times more likely to develop a thyroid disorder than men? Or that thyroid disease, if left untreated, can put patients at risk of developing cardiovascular disease, infertility, osteoporosis, and more? Sounds like some important things to be aware of, huh? So if you want to learn more about this little yet mighty control center of the body, stay with us while we explore the thyroid and the parathyroid glands. Before we jump into the details, here's a quick overview of what we'll cover today. We'll begin by looking at the gross anatomy of the thyroid gland, including its lobes. Then we'll identify the parathyroid glands and where they are. Next, we'll look at the cartilaginous and ligamentous structures of the larynx and trachea, upon which the thyroid and parathyroid glands are found. We'll then move into the vascular supply and innervation of the glands.
And finally, we'll explore some clinical notes to wrap up. Are you ready? Let's get to it. First of all, what is the thyroid gland? The thyroid gland is an organ that is part of the endocrine system. Its main function is to regulate metabolism throughout the body by producing the hormones triiodothyronine and thyroxine. It also helps to regulate calcium levels in the blood by producing the hormone calcitonin. The thyroid gland is located in the base of the neck, just anterior and lateral to the trachea and inferior portion of the larynx. It spans from approximately the level of C5 to T1. The thyroid gland is generally butterfly or H-shaped in appearance and is composed of two primary lobes, each with a defined superior and inferior pole. These two main lobes are simply known as the right lobe and the left lobe of the thyroid gland, and are roughly similar in size and shape. Connecting the two lobes is a region of the thyroid gland called the isthmus, which we can see from both an anterior and posterior view. In many people, there can be a smaller third lobe, which is only present in about 40% of the population. This is the pyramidal lobe of the thyroid gland and can vary in size and appearance. It is thought to be a remnant of the thyroglossal duct, which is present during development. Functionally, however, it is the same as the other lobes of the thyroid gland. The other glands that feature in this tutorial are the parathyroid glands, which we can now see highlighted. Okay, so as this video is there, we are not continuing with parathyroid gland right now. We just understood what's thyroid gland, butterfly shaped gland located in front of trachea under your larynx. Okay, and what is the basic unit of your thyroid gland? It is the thyroid follicle. So here you can see these follicular cells, basic structural and functional unit of your thyroid gland. It is this thyroid follicles. तो एक्चुअल में ये जो टीएस सेक्शन है थायराइड का, ये बनाता क्या है? हमारा थायरॉक्सिन बनाता है. थायरॉक्सिन इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय विच ग्लैंड? थायराइड. ओके, अब थायरॉक्सिन बनाने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? टीएसएच. टीएसएच कहाँ से आता है? हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में से आता है. वे हु इज प्रोड्यूसिंग टीएसएच? We just learned in the previous lecture, TSH is produced by the pituitary gland. A pituitary gland TSH बनाता है. जितना TSH बनाता है उस हिसाब से thyroid gland अपना thyroxine बनाता है. So remember, thyroxine is formed, but thyroxine is nothing but addition of iodine to the thyroxine. I'll just tell you, you don't have to learn too much right now. Just remember the name of the hormone. Which are the hormone produced by the thyroid? Two hormones. One is thyroxine and triiodothyronine. एक T4 है. So what are this? T4 and T3. So hormones are T4 and T3. Thyroxine and triiodothyronine. तो फिर यहाँ पे थायरोनिन दिख रहा है ना. शुरू में वो थायरोनिन ही होता है, लेकिन उसके अंदर जैसे ही आयोडीन ऐड हो जाता है. व्हेन यू हैव हर्ड पीपल सेइंग दैट नमक खाओ, आयोडीन खाओ, इट इज़ बेसिकली आपके थायराइड ग्लैंड के लिए ही बोलते हैं. बिकॉज आयोडीन जब ऐड हो जाता है हमारे टायरोसिन के अंदर, अमीनो एसिड में से एक अमीनो एसिड है टायरोसिन. सी दिस. जब टायरोसिन के साथ आयोडीन बाइंड कर जाता है, यू कॉल दैट एज आयोडोथायरोनिन. जब एक आयोडीन बाइंड होता है, यू कॉल दैट एज मोनो आयोडोथायरोनिन. जब दो बाइंड करता है, यू कॉल इट एज डाई आयोडोथायरोनिन. डोंट फॉरगेट दैट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ आयोडीन. So how is the thyroid hormone formed? In simple ways, thyroxine, what are the names of thyroxine, or you can say the hormone produced by thyroid gland? It is T3 and
T4, T3 and T4, which are combined with the iodine. Then you have to remember, दिस इज़ द ओनली ग्लैंड, मतलब जो आपका थायराइड ग्लैंड है ये एक इकलौता ग्लैंड है जो हॉर्मोन्स को स्टोर करता है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तभी रिलीज़ करता है, डिपेंडिंग अपॉन द फीडबैक गिवन बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड. जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है कि ओके नाउ यू कैन रिलीज, सो एट दैट टाइम इट विल रिलीज द थायरॉक्सिन. Now, what are the function of the thyroxine? Thyroxine is the hormone. It has got very important function. It controls the basic body temperature and the metabolism of the body. मतलब आप जो खाते हैं उसका digestion वगैरह सब thyroid के ऊपर होता है. So basically your digestion, your metabolic activity, putting on weight, losing weight, it is all done by the thyroid gland, and also helps in controlling the temperature of the body, thermoregulation जिसे बोलते हैं. And in ladies, it regulates the reproductive cycle in the female. And rest you can read. Okay, in between this थायराइड फॉलिकल हम लोगों ने डायग्राम में देखा सी सेल थे जिसको हम बोलते थे पैराफॉलिकुलर सेल्स. वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करता है, सो दैट देयर इज़ हाई अमाउंट ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड फॉर द बोन्स फॉर्मेशन. कई बारी जब थायरॉक्सिन बहुत ज़्यादा बन जाता है, थायराइड ग्लैंड जब बहुत ज़्यादा थायरॉक्सिन बना देता है तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म. सो व्हाट हैपन्स टू द पर्सन हु इज़ हैविंग हाइपर थायरॉयडिज्म? हाई अमाउंट ऑफ थायरॉयड हार्मोन थायरॉक्सिन. दैट पर्सन विल हैव लॉट ऑफ स्वेटिंग, फ्लशिंग मीन्स हीट, ऐसा लगेगा भाप निकल रही है, योर बॉडी इज गेटिंग टेम्परेचर. Even though you don't have temperature, but you will feel that your body is burning, flushing जिसे बोलते हैं. Okay, then sensitivity, हल्का सा भी कुछ हो जाता है, you feel very touched or you feel pain, you will be highly sensitive. Then metabolic rate बदल जाएगा, eyeball जो है bulgy हो जाएगा, it will be as if the person is trying to look to a particular thing. वो उस बंदे की प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के अपनी आईज ऐसे बल्ज कर रहा है. द पर्सन's eyes will automatically bulge because of the excess of thyroxine produced. Okay, then you have next condition here that's called as, when this condition happens, जब ऐसे कंडीशन हो जाते हैं इसको हम बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज़. जब गोइटर भी बन जाता है एंड आई बॉल प्रोट्रूडिंग हो जाता है, वी कॉल दैट एज, इस बंदे की हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन. अब अगर थायरॉक्सिन बहुत कम प्रोड्यूस होता है, देन व्हाट हैपन्स? देन देयर इज डेफिशिएंसी. डेफिशिएंसी विल कॉज टू कंडीशन क्रिटिनिज्म एंड मिक्सोडीमा. क्रिटिनिज्म में क्या होता है? बेसिकली इट्स फाउंड इन इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में पाया जाता है, जिसके अंदर उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट बहुत ही कम होता है. बेसिक मेटाबॉलिक रेट इज़ द रेट एट विच योर न्यूट्रिएंट्स आर डाइजेस्टेड बाय द बॉडी. वो बहुत कम होता है और हाइट बहुत छोटी होती है बिकॉज ग्रोथ नहीं हो पाती. एंड स्किन विल बी ड्राई, थिक, and there would be jaundice also at the younger age, or you call it as neonatal jaundice, matlab when the child is in very early days of life, matlab agar 3 दिन का बच्चा, 4 दिन का बच्चा, so that's what you use the word neonatal, initial days of the child. Then lethargy होता है, बहुत tired, no movement at all, very lethargic होता है child. Then constipation is also there. सो इस टाइम क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स के इंजेक्शंस दे देते हैं तो बच्चा ठीक हो जाता है.
देन अनदर कंडीशन इन अडल्ट्स, जब कम थायरॉक्सिन बनते हैं उसको हम बोलते हैं मिक्सोडीमा. दिस वॉज इन चिल्ड्रन, इन्फेंट्स इज द वर्ड, बेटर वर्ड. ये अडल्ट्स में होता है जिसमें स्किन थिक हो जाती है, पफीनेस हो जाता है स्किन का, एंड इवन यू फाइंड स्लो हार्ट रेट एंड बीपी बहुत लो हो जाता है. और उस बंदे को हमेशा ठंड लगती है, कितनी भी मौसम कितना भी अच्छा हो, हमेशा दैट पर्सन डजंट वांट टू सिट अंडर फैन. उनको ऐसा लगता है कि उनको ठंड लग रही है क्योंकि उनका बॉडी का टेम्परेचर बहुत लो होता है. ओके, एंड दे हैव रिटार्डेड सेक्शुअल डेवलपमेंट. दिस वाज अबाउट थायराइड. जब थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है कौन सा हार्मोन, थायरॉक्सिन, जिसके 2 फॉर्म्स आर देयर, T4 एंड T3 डिपेंडिंग अपॉन आयोडीन मॉलिक्यूल. जब 4 आयोडीन लगे हैं हम उसे क्या बोलेंगे, T4. जब 3 आयोडीन लगा होता है तो हम उसको बोलते हैं T3. सो बेसिकली थायराइड ग्लैंड बनाता कौन सा हार्मोन है, थायरॉक्सिन. थायरॉक्सिन डिपेंडिंग अपॉन द आयोडीन इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2. जब 3 आयोडीन लगा होगा हमारे थायरोसिन में, दैट इज द अमीनो ग्रुप टायरोसिन. यू रिमेंबर लाइक दिस, टायरोसिन इज द बेसिक स्ट्रक्चर. If I'll show you one important explanation, this is little extra. Okay, अगर मैं बोलूँ this basically is the structure of okay, this is how your structure of tyrosin. इस ग्रुप पे जब आयोडीन का अटैचमेंट हो जाता है, जब 3 आयोडीन लगते हैं तो हम उसे बोलते हैं, वी कॉल इट एज ट्राईआयोडोथायरोनिन. जब 4 आयोडीन लग जाते हैं हम उसको बोलते हैं टेट्राआयोडोथायरोनिन, थायरॉक्सिन, राइट. सो नेम द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड. देयर इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आप सिर्फ T3 T4 लिखोगे तो भी आपको मार्क्स तो मिलेंगे, बट स्टिल यू शुड बी नोइंग द नेम. T3 का वर्ड व्हाट डू यू कॉल इट, ट्राईआयोडोथायरोनिन. T4 को क्या बोलेंगे, टेट्राआयोडोथायरोनिन. ओके, सो वी कंटिन्यू विद द नेक्स्ट ग्लैंड.